Confused between summarized spoken text and summarized written text? Then this video is for you. Hello everyone, welcome to All About PTE powered by Saviour Education Abroad. I am पुनीत चोपड़ा और आज हम बात करेंगे इन दोनों क्वेश्चन टाइप के बीच के बेसिक डिफरेंस की और दोनों को अटेम्प्ट करने के मेथड की. So let's get started. Now सबसे पहले समराइज स्पोकन टेक्स्ट. स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग का पार्ट है एंड इसके जो मार्क्स कंट्रीब्यूशन है लिसनिंग के अलावा राइटिंग में भी है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप और एग्जाम में आपको 1 से 2 समराइज स्पोकन टेक्स्ट आ सकते हैं. आपको एक लेक्चर सुनाया जाएगा एंड यू विल बी गिवन 10 मिनट्स ऑफ टोटल टाइम इंक्लूसिव ऑफ द लेक्चर. और इस टाइम में आपने लेक्चर को सुन के कुछ नोट मेकिंग करनी है एंड देन यू हैव टू समराइज दैट लेक्चर इन योर ओन वर्ड्स. बेसिकली आपको 50 से 70 वर्ड्स की समरी लिखनी है आफ्टर हियरिंग द लेक्चर. नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर यू विल मेक नोट्स. नोट मेकिंग कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी अबाउट कीवर्ड्स. फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर किसके बारे में है. सो वो एक मेन चीज आपको जरूर कैच करनी है एंड यू हैव टू राइट इन दैट इरेजेबल बुकलेट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू. सो व्हेन यू आर हियरिंग द लेक्चर make sure that you make really good notes. Really good notes, इसका क्या मतलब है? It doesn't mean you can write everything what the lecture is talking about. Just catch or try to catch certain words and phrases and note them in your booklet. और उसके बाद एक summary की form में you have to write about this. Let's see. Content में you have to mention the main ideas of the lecture. जो भी आपने सुना है उसके मेन आइडिया को कैच करके आपने बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन योर समरी. सो आपके कंटेंट के मार्क्स डिपेंड होते हैं कि आप कितने रेलेवेंट आइडियाज प्रोवाइड करते हो. फॉर्म के मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी समरी की लेंथ के ऊपर. आपकी समरी के अंदर यू कैन यूज वेरियस सेंटेंसेस बट it should be between 50 and 70 words. 60 to 65 words would be ideal. Next is your grammar. Make sure कि आपका हर सेंटेंस इनिशियल कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो. अगर आप कोई प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हो तो वो भी आपने इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट करना है. यूजेज ऑफ पंक्चुएशन, फुल स्टॉप्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. सो यू गेट मार्क्स फॉर ग्रामर. एंड देन वोकैबुलरी. आपके वर्ड रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए एंड आपने कोई कॉन्ट्रैक्शंस, कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी लाइक कांट, डोंट यूज दैट. दैट्स नॉट एकेडमिक स्टाइल. देन योर स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीटीई. यू गेट फुल 2 मार्क्स क्रेडिट इन योर स्पेलिंग अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की. सो मेक श्योर कि इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ही आप समरी प्रोवाइड करो. Now coming to summarize written text. Written text basically आपको एक long passage screen पे नजर आएगा and it is a part of your writing module. इसके marks आपको जाएंगे reading as well as writing में. You have to read the passage and then you have to summarize that passage in just a single sentence. यहाँ पे students अक्सर confuse हो जाते हैं कि summarize spoken text में single sentence है या summarize written text में. समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर देना है एंड दैट सेंटेंस शुड नॉट बी मोर देन 75 वर्ड्स. एक्चुअली जो लेंथ है दैट इज जो आपको कंडीशन है दैट इज बिटवीन 5 and 75 वर्ड्स बट यू कैन नॉट एक्सीड 75 वर्ड्स. सो मेक श्योर you take that criteria into mind and it has to be just one single sentence. You can use commas, you can use semicolons, but my advice is one thing, you should write only a sentence of around 50 to 55 words. That would be sufficient. Only then it will be meaningful sentence. Secondly, use only 2 commas in between when you are using conjunctions, not more than that. Otherwise sentence अपनी connectivity and meaning lose कर जाएगा, so you will also lose marks. Summarize written text के लिए भी you get 10 minutes to execute the task. So within that 10 minutes आपको read भी करना है and अपना response भी provide करना है. In exam you will get 1 to 2 summarized written text questions.
समटाइम्स आपको ऐसे भी 2 आ जाते हैं, सो उस केस में समराइज रिटन टेक्स्ट एक आता है, बट यूजुअली आपको 1 to 2 समराइज रिटन टेक्स्ट एग्जाम में जरूर आएगा। ना मार्किंग क्राइटेरिया, यहाँ पे मार्किंग क्राइटेरिया में यू आर गिवन पॉइंट्स फॉर कंटेंट। अगेन, जो भी कंटेंट है, यू विल नॉट पैराफ्रेज एनीथिंग। यहाँ पे आपको कोई सिनोनिम्स वगैरह यूज नहीं करने हैं। यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। सेकेंड, योर ग्रामर। Next, form. Form, you have to write somewhere between like 5 to 75 words, but an ideal word limit would be around 50 to 55 words. Utne words ka sentence is sufficient. You're also given marks for your vocabulary. So make sure you consider all these criteria when you are writing. Now we have 2 sample responses. You can see the difference. The first one is summarized spoken text. The summarized spoken text was about the skyscrapers in New York. The speaker mentioned the kind of bedrock in the city that makes it viable to construct these buildings. However, after pandemic, luxury real estate is not financially viable as they cost over millions of dollars. Finally, the speaker concluded that the projects in New York cost several billion dollars more than those in the Middle East and Asia. So this was the lecture and it has been summarized in this paragraph. Next is summarized written text. So this one contains only a single sentence, as you can see. To increase your confidence and become better in any area, the simple rule is to read and research as much about the topic as possible, because the more you understand and know about the situation, the more confident you will be, and this rule applies to any area you feel insecure. So summarized spoken text was somewhere around 68 to 70 words, whereas this summarized written text, that is somewhere around 45 to 50 words. So this is sufficient. I hope now you were able to make out the difference between both the types of questions. And for any more information, more updates, keep watching All About PTE by Saviour Education Abroad.